amount of noise and become more genuine. Will you choose media without a state or a state without media? He said it without any hesitation. I'll choose media without state. पूंजीपतियों की पूंजी और टीआरपी की दौड़ मीडिया की निष्पक्षता को निकलती भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, एमआयट स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि एमआयट वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या 5व्या सत्रात भारतीय माध्यमे रूल्ड बाय नॉईज और रूल्ड बाय लॉ या विषयावर घेण्यात आली. माध्यमांवरील अतिरिक्त गदारोळ कमी करण्यासाठी माध्यमांचे महसूल मॉडेल बदलण्याची गरज आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या समाजमाध्यमांवरील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार मनीष तिवारी यांनी मांडले. इंडिया टुडे हिंदीचे संपादक सौरभ द्विवेदी, कूचचे संस्थापक अध्यक्ष अप्रमेय राधाकृष्ण, प्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष, कवयित्री सामाजिक कार्यकर्ती शर्मिला इरोमा, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अंशुल अभिजित आणि प्रसिद्ध गायिका हेमा सरदेसाई यांनी यावेळी विचार मांडले. एमआयट वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष विश्वनाथ कराड, कार्याध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू RM चिटणीस या प्रसंगी उपस्थित होते. आदर्श युवा विधायक सन्मान राजस्थानच्या डुंगरपूर येथील भारतीय ट्रायबल पार्टीच्या राजकुमार रावत यांना प्रदान करण्यात आला. विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून कौशल साहू, दिशा करमचंदानी, कृतिका देशपांडे, परिधी शर्मा यांनी मनोगत मांडले. गौतम बापट, चैनिका बसू आणि स्नेहा गाडगिळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अनामिका विश्वास यांनी स्वागत केले. Because that policy architecture was not very rigorously implemented by the succeeding government, the situation remains the same. And that's why I pointed out multiple times in the past that unless media reconfigures their business models to shift from a completely advertisement-driven model and diversify their sources of revenue, there is little hope of seeing any improvement in the sector, and now noise is bound to get shriller. The present model has led to a culture of 24/7 news channels operating on breaking news templates and polarized debates that often distort and sensationalize news, intending to bring about the basest instincts in humankind. To launch hate campaigns, to vilify other people, and are unfortunately able to escape the rigors of the law. I would just end by outlining a few paradoxes which characterize our media space. One is the paradox of the short fuse. While we have increased information dissemination mechanisms, our intolerance for the other person's point of view is also increasing. What we need to fix is the paradox of flawed revenue models, very questionable revenue generation practices. Then you have the paradox of television rating points, which make truth a casualty on a daily basis. Then you have this unfortunate specter of media trials, which impede and transgress into a fair trial which is guaranteed by the Constitution and the law. And finally, you have the non-emergence of rules, agreed rules of engagement in the virtual civilization. To conclude, the problem why media is ruled by noise and not by the law lies in their revenue models. Till the time the media does not fix its revenue models, till the time it remains dependent upon advertisements as the sole source of their revenue, unfortunately, this corrosiveness, this WWF which passes off as primetime news at 9 o'clock at night would only get worse, ladies and gentlemen. ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी MIT WPO स्टूडेंट्स की नाव है.
वो हो। ये नाद जरूरी है इंद्रियों को जागृत करने के लिए। यदि आप में से कोई सिर्फ योगा डे के दिन योगा नहीं करता है, बाकी 364 दिन भी इस अद्भुत भारतीय प्राच्य विद्या का अभ्यास करता है, तो भ्रामरी प्राणायाम अगर कोई करता होगा तो उसको पता होगा कि भीतर के शोर को सुनना कितना जरूरी है। लेकिन मीडिया का काम शोर मचाना नहीं है। एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड टीवी मीडिया, वो आशुतोष जी करेंगे। मीडिया का काम है आपके भीतर जरूरी किस्म के संशय पैदा करना, सवाल पैदा करना, ताकि जो ताकत में है, जो सत्ता में है, आप उनसे पूछताछ कर सकें, उनकी जवाबदेही तय कर सकें। मीडिया का काम है आपको ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करना। जैसे ये एक यूनिवर्सिटी है एमआयट, वैसे ही एक यूनिवर्सिटी है मीडिया, जिसका काम है कि सुबह सवेरे जब आप जागें और अपने नागरिक होने के दायित्व की और पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ें, तो आपको पता हो कि बीते 24 घंटे में देश में क्या घटित हुआ और आज के रोज क्या होने की संभावना है। वो नागरिक होने का दायित्व एक दिन जाके ईवीएम पर बटन दबाने भर का नहीं है, सोशल मीडिया पर अपने प्रिय नेताओं की पोस्ट शेयर करने या अपने अप्रिय नेताओं को गाली देने भर का नहीं है। वो दायित्व रोज का है। जैसे आप अपने घर के बर्तन रोज मांजते हैं, वैसे ही आपको अपने नागरिक बोध को रोज मांजना होता है, और समझने का काम मीडिया करता है। शोर क्यों है, इसकी जवाबदेही उनकी है जो शोर मचाते हैं, और उनकी भी है जो शोर को देखते हैं। मैं यहां आपको आपके अपराध से मुक्त करने नहीं आया हूं। खुशी मुझे इस बात की है कि इसी शोर के बीच डिजिटल मीडिया में कुछ स्वर भी पैदा हुए, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, करोड़ों और अरबों की संख्या में, और जिन्हें आप ये हौसला दे रहे हैं कि इस तमाम कथित शोर और मेन स्ट्रीम के दबाव के बावजूद यू कैन टॉक सेंस। आप साइंस की बात कर सकते हो और संस्कार की बात भी कर सकते हो एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर शोर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर शोर नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। अगर शोर नहीं है तो हमारे और आपके अधिकार नहीं है। राजशाही में लोगों को शोर करने की इजाजत नहीं थी। सामंतवाद में आपको शोर करने की इजाजत नहीं थी। आपने क्यों देश की आजादी के समय लोकतंत्र की बात की? आप अधिनायक बात कर रहे थे, आप तानाशाह सिस्टम अपना लेते। इसलिए क्योंकि जिस शोर से हमें इस देश को आजादी मिली थी, और जब गांधी जी को यह लगा कि बिना शोर किए यह देश आजाद नहीं हो सकता है, तो उन्होंने शोर किया। जब भगत सिंह को यह लगा कि बिना शोर किए उनकी बात अंग्रेज सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने विधानसभा में जाके शोर किया। तो शोर तो अच्छा लगता है, शोर तो करना पड़ेगा। और जो उनको शोर से तकलीफ है, उनको अपने मन में सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई में इस देश की इस परंपरा के साथ है या नहीं है। वो वाकई में इस देश के लोकतंत्र को समझते हैं या नहीं समझते। लोकतंत्र को लेकर उनकी परिभाषा क्या है, और इस लोकतंत्र को वो कितना आत्मसात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आज की तारीख में लोकतंत्र से तकलीफ होने लगी है, इसलिए वो कहते हैं कि शोर को रेगुलेट करिए। वो नागरिक अधिकारों की बात नहीं करते, वो कर्तव्यों की बात करते हैं। And when you observe all the most used social networks in India, whether it's Facebook, WhatsApp, Instagram Reels, all of these, it's not by chance that all these social networks belong or are headquartered in one country, which is the United States of America, right? America is the only country in the world which has social media which is used by every other country across the world. There is no other country apart from maybe China with TikTok, right? There are more countries with nuclear power
and space power than there are countries with social media power. And social media power is more powerful because you start, as in you have the capability which might or might not be used by certain social media players to manipulate what is being thought and not thought. Right? So, coming to the topic of discussion, is there noise on social media? Absolutely there is, right? And the main reason for noise being there on social media, at least the Indian social media context, I think the first main reason is it's because most of the popular ones are owned by a foreign country and not India itself. And these companies are either business driven or they are agenda driven. One of the two has to be happening, and hence they will never be true to the voice of India or what you want to express. Whether it's your lifestyle on Instagram, whether it's your thoughts and opinions on Twitter, whether it's your life updates on Facebook, are you allowed to be yourself without the external influence of anything else? Is always going to be a question unless we ourselves build our own social media and make sure that, you know, this sentiment of wanting one's own social media is not just in India, but it's also across the world. Noise also, there it was bad. If you want to be real political leaders or just leaders in the world, I want you be somewhat, say, follow to your conscience.